Hello students, welcome to Vigyangar. In this video, we are going to present JNU Life Sciences 2021 के questions को. We are going to discuss it in three parts. Let's start. In this given question, there are two statements which are given. इसमें से हमें correct statements या correct combination of statements को पता करना है. तो statement 1 है, when an object is placed in front of a concave mirror between center of curvature and focus, the image formed will be behind the mirror and magnified. तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रखें बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, देन इमेज विच इज फॉर्म्ड विल बी मैग्निफाइड इन्वर्टेड बट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रेदर देन बिहाइंड द मिरर. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है. स्टेटमेंट 2, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर at the center of curvature, the image formed will be at the same place and same size of the object but inverted. So if we place the object in front of a concave mirror but at the center of curvature, तो image जो बनेगी वो inverted होगी, same size की होगी and also formed at the same place, that means center of curvature. तो इसका मतलब statement 1 गलत है, statement 2 is correct, hence option D is correct. In this question, we have to match list 1 items with the list 2 items, which is the wavelength. तो जो electromagnetic radiations दिए हैं, radio waves, infrared, visible lights and X-rays. If we see the radio waves are generally having the highest wavelength because they have to travel a long distance. तो इसमें अगर हम सारे wavelengths में देखें तो सबसे highest wavelength would be option 3. तो A has to be matched with option 3, जो कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है. ऑप्शन सी में A is matching with 3 and that's where option C has to be correct answer. Next, U-238 decays successively to form different intermediates or isotopes. During this reaction, how many beta particles will be emerged? अगर हम इसका U-238 का degradation देखें तो we will see there will be 2 alpha particles and 2 beta particles will be released. Hence, option A has to be correct in this case. Next question. If the two wires each carrying 3 amperes of current in the same direction are separated by 1 meter, what will be the force generated between them per meter of the length? The force of attraction between these two per meter length will be equal to the micron into I1 I2 divided by 2 pi d. If we place the values, we will be getting the answer 1.8 into 10 to the power minus 6 Newton per meter, which is option A. Two light waves from two coherent source of intensity ratio 25 raised to the 1 produce interference. What is the ratio of the maxima and minima formed in the interference pattern? If we know the source of intensity ratio है 25 raised to the 1 and if we put them into the formula, then Imax by I minimum, that means maxima and minima, can be calculated as 36 raised to the 16 or 9 raised to the 4. So hence option C has to be the correct answer in this case. The relationship between structure 1 and structure 2 is same compound, positional isomers, functional isomers or conformational isomers. देखने में क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, बट इफ वी ट्रूली सी दैट दिस क्वेश्चन इज हैविंग अ कार्बन स्केलेटन ऑफ 3 कार्बन, और अगर हम उसे ध्यान से देखें तो दोनों में देखने में रोटेशंस अलग अलग लगते हैं बट दोनों कंपाउंड सेम ही हैं. 3 कार्बन सिस्टम है, तो इसमें फर्स्ट कार्बन पे CH3 है, जबकि इस वाले सेकंड कॉन्टेक्स्ट में सेकंड कंफर्मेशन में CH3 को हमने ब्रॉड कर दिया है, एंड दैट्स वेयर द ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर, दैट both the conformations are belonging to the same compound. आगे चलते हैं. Here again we have to match list 1 item with the list 2 items. यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम दे रखे हैं और उनको एक्सियल डिस्टेंस से हमें मैच कराना है. क्यूबिक, हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक सिस्टम्स को हमें मैच कराना है. तो इफ वी सी इन द गिवन डायग्राम, for a cubic system A is always equal to B and always equal to the C with the following angles, जो कि A वाला आपका मैच हो रहा है फर्स्ट से.
इन द केस ऑफ हेक्सागोनल A is equal to B but not equal to C होता है, which is again matching with the second. Hence A is matching with the first, B is matching with the second, and logically C must be matching with the third. Hence option B has to be the correct answer. इस क्वेश्चन में we have to arrange the following compounds according to the increasing acidity. We have been given the 4 options, but as we can see, none of them are making any logic. Okay, these kind of a question can easily be explained with the help of resonance effect and inductive effect. If we see, because of the NO2 group with extra enhanced resonance, the phenoxide ion can be more stabilized after losing the proton. So option B, that means species B, will be having the highest acidity. उसके बाद होगी आपकी फिनॉल की, एंड देन बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, तो उसकी वजह से तो फिनॉल जो मॉलिक्यूल है उसकी एसिडिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए जो आपका कंपाउंड सी है वो आपका थर्ड लेवल पे आएगा विन डिक्रीजिंग एसिडिटी, एंड साइक्लोहेक्सेनॉल विल बी हैविंग लीस्ट एसिडिटी. तो आपका अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो ए विल बी हैविंग लीस्ट एसिडिटी, फॉलोड बाय सी, फॉलोड बाय डी, फॉलोड बाय बी. ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके दिया नहीं है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था पेपर में. फॉर द फॉलोइंग फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच इज द करेक्ट स्टीरियोकेमिकल नोटेशंस. बहुत सारे नोटेशन दिए गए हैं. जनरली फिशर प्रोजेक्शन को जब भी हम आरएस सिस्टम में डिफाइन करना होता है तो आप बहुत सिंपल से एक लॉजिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं. जो अगर आपका OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है तो जनरली ऐसे कंपाउंड R होते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो आपके S होंगे. तो इफ वी सी, if CHO would be the first carbon, तो very next carbon would be having right hand side OH group, that means R. तो 2R हो गया. थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो 3S हो गया. फोर्थ पोजीशन पे आपका OH राइट हैंड साइड पे है तो अगेन R हो गया. फिफ्थ पोजीशन पे आपका राइट हैंड साइड पे है तो R हो गया. तो द करेक्ट आंसर वुड बी 2R, 3S, 4R, 5R. That means option C. Which of the following amino acid will have only 2 dissociation constants? Histidine, glycine, lysine, and aspartic acid. If we see, histidine, lysine, and aspartic acid have charged side chain. Histidine and lysine have positively charged side groups, while aspartic acid have negatively charged side chain. That means they must be having, these 3 amino acids will be having 3 dissociation constant, while glycine on the contrary will have no such side chain and hence will be minimum possessing 2 pKa or 2 dissociation constant, and option B would be the correct answer. If 1 omega and omega square are the 3 cube roots of unity, what will be the value of 1 plus omega square, 1 plus omega 4, 1 plus omega 8, and 1 plus omega 16? As we know, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज जो होते हैं उसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है. तो अगर हम ध्यान से देखें 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस ओमेगा हो जाएगी. इन वैल्यूज को इफ वी प्लेस तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 1. दैट मीन्स आंसर वुड बी सी, पॉजिटिव 1. इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू n की निकालनी है, और अगर हम इस वैल्यूज को सॉल्व करें तो वी विल बी सीइंग दैट फैक्टोरियल को अगर हम एक्सप्लेन करते चले जाएं और उसे खोलें तो द आंसर वुड बी क्लोज टू 19, एंड दैट्स वेयर द ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. ये सिंपल आपका मैथ्स होता है 11th-12th लेवल का, तो इफ यू विल अप्लाई यू कैन इजीली क्लियर इट आउट. अगेन एक और मैथ का क्वेश्चन है. इफ n की वैल्यू square root of 12, again square root of 12 and up to infinity है, तो what is the value of n? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन करने पड़ते हैं. मान लीजिए y की वैल्यू जो है वो अंडर रूट 12 प्लस y है, तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल बी गेटिंग y की 2 वैल्यू आएंगी, एक 4 एंड एक -3. अगर नेगेटिव वैल्यू को इफ वी नेग्लेक्ट तो देन द होलसम वैल्यू विल बी इक्वल टू 4. वैसे भी 3 या -3 जैसी कोई वैल्यू दी नहीं गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 4.
If log 2 square root of 3 is 144 is equal to c, तो we have to calculate the c square. अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अगर हम एंटी लॉग इसका लेते हैं तो 144 विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 रेज टू द पावर c, और अगर हम c की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगी और c स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16. Hence the option A would be the correct answer in this case. Again one more maths question, लगातार ही मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, लगता नहीं लाइफ साइंस का पेपर है. The two lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are perpendicular to each other. If you know, if two straight line equations are perpendicular to each other, then the slope का जो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है वो इज इक्वल टू -1 होता है. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें हम स्लोप्स की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो होगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 इज इक्वल टू 0. आगे चलते हैं. 4 white and 3 black cows in 5 days give the same amount of milk that of 3 white and 5 black cows are giving in 4 days. Which of the following sets of cows will give least amount of milk per day? If we consider white code W and black code B, so then 5 into 4 plus 3 will be as equivalent to as 4 into 3W plus 5B. If we solve it, so then we will find कि एक जो व्हाइट काउ देती है वो देती है 5b by 8 रेशियो के इक्विवेलेंट. अगर हम इनको अगर फॉलोइंग कंडीशंस में रखें तो वी विल बी फाइंडिंग दैट 8w plus 2b यानी कि 8 व्हाइट काउस एंड 2 ब्लैक काउस आर गिविंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क. So hence option D has to be correct answer, that 8w and 2b are giving the least amount of milk in a day. Ramesh, Naveen and Vipin are tailor, grocer and photographer, not necessarily in the same order. Vipin married Ramesh's sister and earned more money than photographer. Grocer is the only child of his parents and earned least. Now हमें कॉलम 1 के जो पर्सन्स हैं उनको उनके प्रोफेशन से मैच करना है. दैट रमेश क्या है, नवीन क्या काम करता है एंड विपिन क्या काम करता है. लेट्स गो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट. बड़ा आसान क्वेश्चन है. इफ वी सी स्टेटमेंट 1, Vipin has married the Ramesh sister. इसका मतलब रमेश cannot be the only child of his parents and definitely he cannot be the grocer. Now, statement 2, Vipin earn more money than photographers means he cannot be photographer as well as cannot be grocer because grocer सबसे कम कमाता है. That means he must be the tailor. Now statement 3, grocer is the only child of his parents as we discussed. That means grocer Ramesh नहीं हो सकता because he has married to the Vipin, which suggests that Ramesh is a photographer और Naveen is a grocer. So अगर हम इसके हिसाब से जाएं तो option B has to be the correct answer, that Ramesh is a photographer, Naveen is a grocer, while Vipin is a tailor. Which of the following items are present in a typical bacterial cell? Ribosome, lysosomes, peptidoglycan and Golgi bodies. एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेनस कंटेनिंग ऑर्गेनेल नहीं होते लाइक लाइसोसोम्स और गोल्गी बॉडी. दे डेफिनेटली देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर एंड दे आल्सो हैव राइबोसोम्स फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेसेस. Hence A and C would be the right choice. Hence option A would be the correct answer in this case. The Nobel Prize in Chemistry 2020 was awarded jointly to Serpentier and Doduna for. If we see, these two ladies got the Nobel Prize for CRISPR-Cas9 discovery, that means which can be used for the genome editing, and hence the correct answer would be option D. इस क्वेश्चन को आप बहुत एक्सपेक्ट करिए और हर बार हर साल के नोबेल प्राइज विनर्स को आपको यू शुड रिमेंबर. Identify the correct order of atmospheric layers starting from the Earth's surface. All layers are not included. आपको चार ऑप्शंस दिए हैं. If we see in the diagram, so if we start from the Earth's surface, troposphere is the first layer, followed by the stratosphere as we go towards the space, then mesosphere, then thermosphere, and then space starts, that means exospheres. So if we go by this way, then troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere, it is in the order in option A. So hence option A
is the correct answer. Match the following. Again, we have been given certain elements in column 1 और उनको मैच करना है उनके respective ores से. For these kind of a question, we are giving you a table. If we see in the table, aluminium का जो ore होता है वो bauxite है. That means A item का मैच होगा फर्स्ट से bauxite से. कॉपर का कॉपर पायराइट्स होता है और चाल्को पायराइट्स. आयरन का हेमाटाइट या मैग्नेटाइट, जबकि मैग्नीशियम का डोलोमाइट होता है जिसमें के आपके कैल्शियम भी होता है. तो अगर इफ वी गो बाय दिस आंसर, दैट मींस ए का क्या होगा 1, बी का क्या होगा 2 होगा, आयरन का सी का थर्ड एंड डी का आपका फोर्थ, विच इज ऑप्शन बी. बहुत सिंपल सिंपल डायरेक्ट रिलेशंस हैं. मैच द फॉलोइंग में. What would be the concentration of hydroxyl ion for a solution containing 5 into 10 power minus 4 molar protons? If we see in this question, तो बड़ा सिंपल है कि as we know the ionic product of water at 25 degrees Celsius is equal to hydroxyl ion into protons. At 25 degrees Celsius the ionic product of water is की वैल्यू जो होती है वो 10 power minus 14 होती है. If we place the values, तो then hydroxyl ion की concentration जो निकल के आएगी वो आएगी 2 into 10 power minus 11 molar, which is our option C in this case. Principle of competitive exclusion refers to dominance of predators over prey resulting into elimination of the latter. Two species with similar environmental requirement cannot coexist indefinitely in the same habitat. Excessive growth of herbivore results into reduction of vegetation, or competition between two individuals of a same species resulting into elimination of the weaker one. If we carefully see, competitive exclusion principle state clearly that two species with identical niches cannot coexist indefinitely. Hence, option B would be the correct answer in this case. कोई भी दो स्पीशीज डेफिनेटली जिनका सेम एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट है, सेम निश है, वो कुछ टाइम तक तो रह सकती हैं बट इनडेफिनेटली नहीं रह सकती, बिकॉज उनमें आपस में कंपटीशन होगा. कोई एक टॉप करेगी और कोई एक जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी. Which of the following is correct regarding the mutation of hemoglobin gene causing sickle cell anemia? ये तो classical questions है जिसमें कि glutamic acid, which is a charged residue or a polar residue, is replaced by a hydrophobic amino acid, that is valine. So option C is the correct answer. Which of the following is correct regarding the formation of image in transmission electron microscope after a beam of electron interact with specimen? Generally, TEM के अंदर high beam of electrons pass through the specimen and make a shadow image of the detector having different black and white shades. तो generally एक shadow image बनाई जाती है specimens की through this high beam accelerated electrons in TEM. तो option B has to be the correct answer in this case. Which of the following position of polypeptide is cleaved by Edman reagent? ये क्लासिकल क्वेश्चन है. एडमंड रिएजेंट इतना फेमस आपका रिएजेंट है पेप्टाइड सीक्वेंसिंग में कि आपको टर्मिनल्स पता करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली द एन टर्मिनल. तो इफ वी सी इन दिस केस द फिनाइल आइसोथायोसाइनेट PITC इज द एडमंड रिएजेंट जो कि रिएक्ट करता है NH2 ग्रुप से ऑफ अ पेप्टाइड, और इससे रिएक्शन करके वो कलर्ड फिनाइल थायोहाइड्रोटेन डेरिवेटिव बनाता है जिसको कि आप डिटरमाइन कर सकते हैं. तो इसीलिए एडमंड रिएजेंट जनरली यूज होता है डिटेक्ट करने के लिए एन टर्मिनल को. तो ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. Which of the following amino acid has asymmetric C beta atom? थ्रियोनिन, फिनाइलएलानिन, ल्यूसिन और लाइसिन. अगर आप ध्यान से देखें, आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन ये दो अमीनो एसिड हैं अकेले which have the two asymmetric carbon, alpha carbon and beta carbon, and both can make 4 stereoisomers. ये जनरली क्लासिकल क्वेश्चंस है जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो इन दिस केस थ्रियोनिन वुड बी द आंसर because it has two asymmetric carbon, C alpha and C beta. Option A. Types of non-bonded interaction involved in stabilization of biomolecular structure: salt bridges, hydrogen bonds, disulfide bridge, non-polar interaction, stacking of aromatic subgroups. Now we have to choose the most appropriate answer from the options given below. ध्यान रखिए क्वेश्चंस में बोला गया है नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन, दैट मींस नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन. तो ऑब्वियस सी बात है इसमें डाइसल्फाइड ब्रिज नहीं आएगा.
बाकी के सारे जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है दे आर यूज्ड फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स। तो ए, बी, D and E has to be the correct answer, but in none of the option this is given, hence in this case no option is the correct one. The gene coding for the glycogen debranching enzyme has been knocked out in mice. In this context, the following statements are made. Statement 1, the mice will exhibit decreased capacity to move glycogen. Statement 2, the blood glucose levels between meals will be lowered in these mice. Now 4 options are given. हमें चूज करना है कि इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या दोनों ही करेक्ट है या दोनों ही इनकरेक्ट है। तो if we see both the statements are correct because debranching enzyme plays an important role in degradation of glycogen and ensure the availability of glucose during fasting. तो स्टेटमेंट डेफिनेटली फर्स्ट करेक्ट है कि अगर ग्लाइकोजन डीब्रांचिंग एंजाइम नहीं होगा तो ग्लाइकोजन मोबिलाइज नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल भी डाउन हो जाएगा इन ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and statement 2 is true, hence option A is the correct answer. Which of the following statements about a transcription unit is correct? A non-template strand has the complementary sequence as mRNA except T is replaced by U. A template strand has the same sequence as the mRNA except T is replaced by U. RNA synthesis is complementary and anti-parallel to the template strand and RNA synthesis is complementary but not anti-parallel to the template strand. अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो जो mRNA का डायरेक्शंस होता है वो एंटी-पैरेलल होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और उसका जो सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली सेम होता है एज ऑफ नॉन टेम्पलेट और कोडिंग सीक्वेंस के एक्सेप्ट T is replaced by U. So hence in this case option C would be the correct answer, that RNA synthesis is complementary and anti-parallel to the template strand. Which of the following is true about the bacterial tryptophan biosynthetic operon? It is an example of a positively controlled repressible operon. It is an example of a negatively controlled repressible operon. Tryptophan does not function as an inducer. यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ऑब्वियसली ए और बी में से कोई एक होगा, तो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑप्शंस को चूज करना है, उसमें से करेक्ट आंसर्स को वी हैव टू फिगर इट आउट. Operons generally can be induced in the presence or absence of inducers. In negatively regulations, what happens is repressor binds to the operator and switch off the genes expression. जबकि positive regulations में क्या होता है, the transcription bind to promoter to switch on the gene. अब ट्रिप्टोफान का बायोसिंथेटिक ऑपरेंस की बात करें तो ट्रिप्टोफान जनरली अगर आपके बैक्टीरिया के नियर सराउंडिंग्स में नहीं होगा तो जो आपके ऑपरेंस जीन्स हैं वो स्विच ऑन रहेंगी और ट्रिप्टोफान की सिंथेसिस करेंगी. बट सपोज ट्रिप्टोफान इज ऑलरेडी प्रेजेंट देन व्हाई बैक्टीरियल जीन्स विल सिंथेसाइज द ट्रिप्टोफान. तो उस केस में क्या होगा, योर ट्रिप्टोफान विल बाइंड टू द रिप्रेसर और इट विल ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ द ट्रिप्टोफान इटसेल्फ. इसीलिए ट्रिप्टोफान एक्ट एज अ को रिप्रेसर टू स्विच ऑफ द जीन्स एंड इसीलिए इसमें अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, दैट ट्रिप्टोफान is a negatively controlled repressible operon and tryptophan is not an inducer, it is a co-repressor. A promoter is required for gene transcription. Which of the following is not a feature of a promoter? It contains the first nucleotide that is transcribed to an mRNA. It specifies which DNA strand is used as a template. The DNA sequence to which the transcription machinery binds or includes the first codon of the mRNA. इसमें से कोई एक जो स्टेटमेंट है विच इज नॉट द फीचर ऑफ अ प्रमोटर. अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इसके अंदर जनरली प्रमोटर अपस्ट्रीम होते हैं, दे डिफाइन कि विच जीन हैज टू बी सिंथेसाइज्ड और एक्सप्रेस्ड. दैट मींस दे स्पेसिफाई द डीएनए स्ट्रैंड विच विल बी यूज्ड एज अ टेम्पलेट और ये ऑल्सो डिसाइड करते हैं कि वो सीक्वेंस जहां पर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी आर गोइंग टू बाइंड. तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए और डी में से हमारा कोई एक इनकरेक्ट है. अगर आप ध्यान से देखें एक कोई भी प्रमोटर जो होता है इट एंड्स एट द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ जीन. इसमें एक कोडॉन नहीं इन्वॉल्व होता, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होता है. तो इसका मतलब ऑप्शन डी वुड नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन. दैट मींस जितने भी प्रमोटर्स होते हैं उनके अंदर फर्स्ट कोडॉन नहीं फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है जहां से कि एमआरएनए की सिंथेसिस
स्टार्ट होनी होती है। तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। यूजिंग द पीके वैल्यू फॉर ग्लूटामेट, जिसमें पीके की 3 वैल्यूज दे रखे हैं, इंडिकेट द नेट चार्ज ऑन द ग्लूटामेट एट पीएच 1। अगर हम इसे सॉल्व करें पीआई के लिए, तो पीआई निकालने के लिए दो क्लोजेस्ट पीके हो जाएंगे आपके 2.19 एंड 4.2, और उसकी वजह से आपका जो पीआई की वैल्यू आएगी वो आएगी अराउंड 3.2 के आसपास। दैट मीन्स अगर आप 3.2 पे इस ग्लूटामेट को रखते हैं तो मॉलिक्यूल विल बी हैविंग 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव चार्ज, बट अगर उससे नीचे रखेंगे तो मॉलिक्यूल विल बी हैविंग पॉजिटिव चार्ज ओनली। अब अगर आप ध्यान से देखें ग्लूटामेट में COH वुड बी फुल्ली प्रोटोनेटेड, दूसरा COH जो है साइड चेन का वो भी फुल्ली प्रोटोनेटेड रहेगा, और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा NH3 का। दैट मीन्स अगर किसी भी इस तरह के क्वेश्चंस में अगर किसी भी अमाइनो एसिड्स को हम लोअर पीएच पे रखते हैं तो वो फुल्ली प्रोटोनेटेड होता है, जबकि अगर हम उसे हायर पीएच पे रखते हैं तो वो फुल्ली डीप्रोटोनेटेड होता है। जनरली हाई पीएच पे इट कैरीज द नेगेटिव चार्ज एंड इट द लोअर पीएच पे वो कंटेन करता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज केवल NH3 पे आ सकता है, which is the only one molecule present in a glutamate, and that's where it will be having only one positive charge, that is option A. Next question. Again match the following here, that match the sugars with the number of chiral carbon atom present in a given molecule. ग्लूकोज में कितने होते हैं, राइबोलोज में कितने होते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितने होते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कितने होते हैं। तो DH डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की अगर हम बात करें DHA की, तो उसके अंदर एक भी आपका एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता है। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में देयर इज वन एसिमेट्रिक कार्बन, डी राइबोलोज में दो, वाइल डी ग्लूकोज में चार। तो अगर इफ वी मैच अकॉर्डिंगली, तो ऑप्शन बी would be the correct answer, that A would be having equal to 3, B would be having 4, C would be equal to 2, and D1 will be equal to 1. In the left column are the conformation of DNA and in the right column are the associated characters. Again एक match the following है, जिसमें column 1 की जो conformation of DNA हैं उनको आपको different types के उनके एट्रीब्यूट से मैच करना है। सुपर कॉइल डीएनए दे रखा है, ट्रिपल हेलिकल डीएनए दे रखा है, डबल हेलिकल डीएनए दे रखा है। तो जब भी डबल हेलिकल डीएनए होता है इट्स वेरी नेचुरल कि दे हैव द वाटसन क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while triple helical DNA में they have Hooke's base pairing where the triplex DNA has 2 strands, जो कि B form of a DNA में always there will be Watson Crick hydrogen bonding। तो जो तीसरा स्ट्रैंड है वो इस B DNA से which has the Watson Crick hydrogen bonding उसके साथ Hooke's के थ्रू कनेक्ट होता है, and that's where B will be having the connection with 3, while आपका जो डबल हेलिकल डीएनए है C will be connected would be the 1, and इस केस में ऑप्शन B would be the करेक्ट आंसर। सुपर कॉइल डीएनए जो होता है वो क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है जिसको कि टोपो आइसोमरेज जो है निक करके उसको रिलैक्स करता है। तो ऑप्शन ए दैट मींस सुपर कॉइल डीएनए विल बी कनेक्टेड टू द क्लोज सर्कुलर रिलैक्स्ड बाय निकिंग वन स्ट्रैंड बाय टोपो आइसोमरेज। Which one of the following TCA cycle enzyme is a membrane bound? ये तो बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है। सक्सिनेट dehydrogenase is the answer. That succinate dehydrogenase is the only enzyme which remains bound to the membrane, which is involved in both ETC as well as in आपका TCA cycle. तो ऑप्शन A has to be correct answer, that A only. इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अस, जिससे हमें आने वाले और वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिले। अगर आपकी कोई स्पेशल किसी एग्जाम को लेकर रिक्वायरमेंट है तो प्लीज डू मेंशन एंड कमेंट करिए, जिससे वी विल बी एबल टू सॉल्व दोस। थैंक यू वेरी मच।